लंच हो गया. क्या खाया भाई? आलू के पराठे सर. अरे वाह, क्या बात. All right. So we have had the introduction of autopilot. What is this device? Basically, autopilot is the brains behind steering. Autopilot basically replaces the human being when in need. In given condition, what the humans are doing, autopilot does a little bit better, but only in given condition. Humans are better in other places. So in all conditions, autopilot will be used is not the case. Autopilot shall not be used in confined waters. It should not be, never should be used for collision avoidance. It should not be, generally not used for large alterations unless it is open sea. So a few things have to be kept in mind. But when we are keeping the course for a long period of time, autopilot can definitely be used. It provides better fuel efficiency, better timing, ETA, etc. So it's a good device that we can have on board ship. As we have already understood that the autopilot system is an electronic and electrical system. It combines electronics and electrical system. Electronics, as you know, small voltages, छोटे-छोटे voltage पे काम करता है, and smart thinking is done. Electricals में बड़े-बड़े चीजें operate होती हैं, बड़े motor, heavy motor, hydraulic motors and all that. So autopilot system is a combination of electronics and electrical system. Like every other electronic device, there is a software basically. The software is basically taking inputs, doing calculations, giving output. So that is what is done. Now, having known that, let us simplify what is autopilot for second mates. The autopilot system takes input from the gyro steering, gyro compass. It also takes input from the course setting control, which is provided by the navigator. It also takes input from the rudder angle indicator. There is a mechanical link when the rudder operates at the stern there. You have seen in the bridge that there is an indicator which is also moving. When you give the helm, you can see what is the rudder angle. So all these three inputs are obtained by this autopilot system. A comparison is made in order to have an error voltage. If there is a difference between the two, that means the gyro reading and the course setting CTS, if there is a difference, an error voltage is developed. This error voltage is also summed up in summing amplifier, something what we call summing amplifier. We will make the diagram. Summing amplifier mein we also have the input of rudder angle indicator. All combined together, then autopilot finally decides how much of rudder is to be applied, and it gives a command to one thing called telemotor. Autopilot system, after doing all this calculation, gives a command to the telemotor. This telemotor is in the bridge, which is transferring the instruction from bridge to the steering flat. So in the steering flat, there is another telemotor. दो telemotor होते हैं. एक bridge में जो data transmit करता है, जो signals transmit करता है, and there is another one in the steering flat, which is the receiving telemotor. It receives the signal, and based on the signal, the steering hydraulic system will be operated, and the rudder will move by the amount
as commanded by the autopilot system. In general, this is what is autopilot system. Divya, have you understood? Yes, sir. Okay. Shamit, understood? Shamit bhai? Shamit गायब है लगता है. सर शायद उसके ना नेटवर्क ज्यादा की लंच खा प्रॉब्लम लिया होगा। हाँ सर, नेटवर्क आज सबका प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सर। नहीं सर, उसने बोला था कि उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है प्रिंस, आप भी बताओ, आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है तो बताओ, समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वी विल गो टू द स्लाइड, ऑन द स्लाइड वी विल डू द रीडिंग। सेम थिंग जो हमने बात किया वही चीज होगी वहां पे। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे और रिफाइन करेंगे रादर अपने ऑटो पायलट सिस्टम को। अभी तक जो हमने देखा था कि एरर वोल्टेज इतना है तो इतना रडर दे दो, एरर वोल्टेज कम है तो कम रडर दो, अगर इतना है तो इतना रडर दो, अगर जीरो है तो जीरो रडर दो। ऐसे स्टीयरिंग हो पाएगी क्या कि रडर हमने तब तक दिया हुआ है जब तक डिफरेंस है? ऐसे स्टीयरिंग होती है क्या, या पहले हम मिडशिप कर लेते हैं? पहले मिडशिप कर लेते हैं। पहले मिडशिप करते हैं सर। तो इसमें स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन होती है। पहले हम इमीडिएट देखते हैं कि कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से हार्ड पोर्ट स्टारबोर्ड कर देते हैं, पोर्ट 20 पोर्ट 25 स्टारबोर्ड 20 कर देते हैं। सेकंड फेज में जब स्विंग करने लगती है तो स्विंग को चेक करते हैं, अगर स्विंग तेज हो रही है तो थोड़ा पहले मिडशिप कर देते हैं, और when we see that with this swing the vessel is going to overshoot तो काउंटर रडर भी देते हैं। तो ऑटो पायलट सिस्टम में भी ये स्टेजेस होते हैं। देयर आर स्टेजेस in which the autopilot is working, and on the basis of these stages autopilot systems are named as PID system, PID autopilot. What is this PID? PID stands for proportional, integral and derivative control। जो हमने अलग अलग फेजेस में देखा कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, तो उन अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग ऑपरेशंस के मॉड्यूल हैं, और जिस ऑटो पायलट में ये सारे मॉड्यूल हैं उनको हम पीआईडी ऑटो पायलट बोलते हैं। So let us go to the slides, we will read it there. We will also make a diagram, block diagram of the autopilot system, where we are going to see that there is a gyro input, there is rudder angle indicator input, there is force setting that we do for vessel to steer, then there is comparison happening, there is summing amplifier, there are telemotors. All this put together, we have an autopilot steering system. So let me share the slide first. 1 second. Let us find out the file. All right, so this is what you are saying, autopilot. Is this the autopilot? नहीं सर, सर ये तो स्टीयरिंग कंसोल हो गया पूरा। Very good, well done. This is steering console. In this, there, अरे क्या हो गया? In this,
there is a gyro repeater. There are so many controls, maybe rate of turn indicator. There is wheel also. So this is the whole console. उसमें हो सकता है ऑटो पायलट का छोटा सा एक मॉड्यूल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सारा काम कर रहा है। इनपुट यहाँ वहां से इनपुट आएगी, इधर से इनपुट आएगी, gyro से इनपुट आएगी, रडर एंगल का इनपुट आएगा। All that put together, the autopilot system is going to work. So this is steering control. Also possible that at the bottom here there is gyro compass. इसी कंसोल के नीचे में, steering console के नीचे में, the gyro compass, actual gyro compass, master gyro compass will be there. So read. Go ahead and read. gyro compass एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या शिप का? मास्टर एक gyro से compass ज्यादा? हाँ, हो सकता Yes. है। सर हाँ सर, दो तो देखे ही हैं सर। दो होने चाहिए, कम से कम दो होते हैं। हाँ सर। एक यहाँ पे, दूसरा सर बाकी वो electrical room में रिपीटर्स हो normally जाते हैं ना सर वो तो। come again? सर मास्टर gyro compass की बात कर रहा है हाँ, मास्टर तो master एक ही gyro रहता है ना compass, सर। सर वो भी एक दो ही रहता है, एक स्टैंड बाय रहता है, एक स्टैंड बाय में रहता है, बाकी सारे रिपीटर्स होते हैं। बाकी सारे रिपीटर्स होते हैं। हाँ, जो पोर्ट स्टारबोर्ड में देखते हैं, जो ब्रिज फ्रंट पे देखते हैं, वो रिपीटर्स हैं। जो स्टीयरिंग कॉलम पे आप देखते हैं जिसको, और जिसको देख के आप स्टीयरिंग करते हैं, वो भी रिपीटर है। नॉर्मली उसके जहाँ से नीचे भी मास्टर रीडिंग gyro। लेते हैं, नॉर्मली जहाँ से भी रीडिंग लेते हैं अपन यूज करते टाइम पे वो सारे रिपीटर्स ही होते हैं। हाँ, जो सिंक करने के टाइम पे करते हैं वो वाला मेन मास्टर होता है ना। एग्जैक्टली, मास्टर से रिपीटर को सिंक करते हैं। मास्टर को देख करके, जैसा अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये वाली यहाँ पे हो सकता है जब इसका ढक्कन खोलेंगे, इसका ये वाला ढक्कन खोलेंगे, तो यहाँ पे जायरो कंपास होगा और उसमें रीडिंग होगी। यहाँ पे मे बी डिजिटल में रीडिंग होगी, रेड कलर में या जिस कलर में भी, कि कितना वैल्यू है अभी, 000 है, कितना है वैल्यू। द सेम वैल्यू इज shown in the repeater here. It is also going to starboard side, also going to port side, going to bridge front, all the places. These are all repeaters. This will be your repeat. एक ही होता है ना, आप कह रहे हैं दो होता है? नहीं, ये तो एक हो गया। एक कहीं पीछे की तरफ लॉकर रूम के आसपास में, इलेक्ट्रिकल रूम में कहीं पे एक और जायरो कंपास हो सकता है आपके पास स्टैंड बाई। सर स्टीयरिंग कंपार्टमेंट में होता है ना सर? वहां भी हो सकता है, वहां दूसरा, वहां भी रिपीटर होता है बेसिकली। देयर कैन बी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, पर दो जायरो कंपास होने चाहिए जहाज में। एक जो हम जनरली यूज करते हैं, एक स्टैंड बाई। तो सर मतलब रिक्वायरमेंट दो की है। हाँ, एग्जैक्टली। पर सर हमने तो एक ही देखा है। दोबारा ढूंढ लेना कहीं जाके। सर वो वहीं पे ही होता है, जहाँ जाओगे तो ढूंढना दूसरे वाला कहाँ कंसोल्स है। का जो रेडियो रूम होता है वहां पे मिल जाता है सर। वो नॉर्मली वो वहीं कहीं होता है। कहीं कोने में बंद होता है। एक्स्ट्रा दूसरे वाला जो है, इट इज नॉट आउट इन द ओपन, नॉर्मली कहीं लॉकर वॉकर के एरिया में, कहीं सिक्लूडेड एरिया में होता है जनरली। तो मेरी सर वही रेडियो रूम पे। Okay, so come to the autopilot description. Just read through this and see if it is appealing to you, if it is giving you a clear understanding what we are reading. Simple language में है, not complicated. मैंने तो थोड़ा बढ़ा के भी बता दिया, एकदम simple terms में। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। नहीं आ रही है? नो सर, अभी आई Now, सर। okay. Next,
Okay, so what is done? Comparison of course to steer with the ship's heading, current heading. जिससे भी स्टीयरिंग हो रही है उसके हिसाब से विल मेक ए कंपैरिजन. नेक्स्ट. तो इतने देर में जो मैंने बात करी आपसे, 1 घंटा लगा दिया बात करते हुए, ये 2 स्लाइड में लिखा हुआ है. ऑल क्लियर? नो क्वेश्चंस? नेक्स्ट. सर ये पैराग्राफ फिर से समझा दिए कौन सा Last पैराग्राफ? सर ये पहला वाला अभी जैसा हमने कहा, जो जायरो की रीडिंग है दैट इज कमिंग आउट विथ अ वोल्टेज corresponding to the reading of the gyro compass or gyro compass repeater. There is a voltage which is developing. A number मान लो, जैसा हमने कहा था, मान लो 10. दूसरा इनपुट का वोल्टेज है which is coming from course to steer. Or do you want me to explain this again on the board? हाँ सर बहुत बता दिया तो सिंपल है. चलो ओके, गेटिंग आउट फ्रॉम हियर. One second. Now what we are actually seeing, you have the gyro compass which has got readings. The readings of the gyro compass is converted into voltage, basically potential difference. Voltage 12 volt, 14 volt, 15 volt ऐसे होता है ना. So each one of them has got a corresponding voltage. Let us say for example 0 volt, ये है तो 2 volt, ये है तो 4 volt. अलग अलग हर रीडिंग की एक वोल्टेज होती है. Let us say 270, इसका रीडिंग मान लो the voltage which it is reading is let us say 75 volt for example. तो अगर जायरो रीड कर रहा है 270, तो इसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इज समथिंग लाइक 75 वोल्ट. और आपकी जो कोर सेटिंग है, जो आपको सीटीएस है, कोर्स टू स्टीयर करना है, लेट अस से दिस इज 290 डिग्री. So there is a difference between the current reading and where you have to go. There is a difference between the two or not? Yes sir. This will also be having a voltage value. This 290 degree, which is coming from here, this is core setting control. This also has a value, let us say 78 volt. So now comparison is made between this and this. Is there a 3 volt difference? Yes sir. This is known as error voltage. Sir, Are we clear on this? Yes sir. This error voltage is also added up with rudder angle indicator. एक और इनपुट Sir, जाती है. Yes. Okay. असद बोल रहा तो समझ नहीं आ रहा. Along with this error voltage, there is also rudder angle indicator input. This makes it, let us say, plus 0.2 volt. So total error voltage is 3.2 volt or not?
Yes. Now this is something from here it goes to telemotor. Telemotor को बताया जाता है कि भाई ये काम करना है, ये ट्रांसमिशन करता है ब्रिज में. It goes to telemotor receiver which is in the steering flat, and then this will operate the rudder. So basically comparison is done between the present heading and the course to steer, creating an error voltage. Along with that, also there is input from the rudder angle indicator. All combined together, a final output is created. This output is given to the telemotor transmitter. Telemotor transmitter gives it to telemotor receiver, and this in turn operates the steering steering system, and the rudder will be operated either to this side or this side. So ये rudder angle error क्या कैसे आएगा? Error नहीं है, rudder angle का indicator. Okay. Let us understand this, that the ship is doing 270 and 290. We have to go 20-degree difference. Yes, sir. For that, the 3-volt difference has given the rudder to starboard, let us say 15 degrees starboard. This is what is supposed to be given by 3 volt. कि starboard में 15 डिग्री का value देना है. But when this 3 volt was being created, the rudder angle was already, let us say, 5 degree was already there. So यहाँ से 15 देंगे तो ये 20 पे चला जाएगा या नहीं? Yes, sir. So what is done? The comparison is made from this RA angle कि ये 15 डिग्री तो मुझको देना है 3 वोल्ट के लिए, लेकिन 5 डिग्री ऑलरेडी है. That 5 degrees input is already going. I have to give 15, but 5 already है. So plus 10 degrees more I have to give, and that 10 degrees will come from here. That means output of comparison between the two, 270 290 का comparison तो हो गया, प्लस साथ में अभी कहां पे रडर एंगल है वो उसके बेसिस पे final output is created, which is basically operating the rudder. Did we get it? समझ में आई बात? Yes, sir. अगर नहीं तो ऐसे सोचते हैं, यू आर स्टीयरिंग, आप स्टीयर कर रहे हैं, कैप्टन ने कहा ओके पोर्ट 5, आपने रडर को पोर्ट 5 कर दिया. नाउ कैप्टन सेज पोर्ट 10, तो आप क्या पोर्ट 15 पे लेके जाएंगे? जहां पे था वहां से 10 ऐड कर देंगे? No, sir. क्या करेंगे? 5 ऐड करेंगे सर. 10 पे ले जाएंगे. पहले जितना था उस चीज को रखेंगे ना, उसका इनपुट आपने ले लिया कि 5 तो ऑलरेडी हूं मैं, तो और 5 बढ़ाना, यही करेंगे ना? Yes, sir. That is what it is doing. So रडर एंगल अभी कहां पे है, इसका इनपुट का वैल्यू है या नहीं? What do you जी say? सर. Yes, sir. Chevron, understood? Yes, sir. Clear? Yes. Yes, sir. आहो सर. Okay, ठीक है. So we share once again.
Okay, read once again now the whole thing. Quickly go through it and see now if you understand the chain of information which is available here. Next, clear? Yes, sir. Next, जो कमांड फाइनली जानी है वो टेलीमोटर के थ्रू जाती है, यहाँ से ट्रांसमिट होता है ब्रिज से और स्टीयरिंग फ्लैट पे रिसीव होता है सिग्नल और उससे फिर स्टीयरिंग प्लांट जो है वो ऑपरेट होता है एंड द रडर इज मूव अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट, नाउ आपने रडर ऑपरेट कर दिया था 270 से 290 पे पहुंच गया, तो 290 कोर्स सेटिंग द सेम 75 वोल्टेज फॉर 78 वोल्ट फॉर बोथ ऑफ देम. The gyro has now reached 290. CTS was 290. CTS 290 was resulting in 78 volt. The gyro also of 290 is also 78 volt. So what is the difference between the two? Nil. Zero. That means error voltage is zero. No rudder required. The ship is doing what she is supposed to be doing. CTS was 278. Sorry, 290. And gyro is also 290. So no error voltage, no rudder applied. Vessel is moving on 290. Clear? Yes, sir. All right. So like we said, that the steering does not happen कि इतना रडर मतलब इतना डिफरेंस तो रडर दे दो, इतना डिफरेंस तो इतना रडर दे दो, ऐसे नहीं होता. There are multiple levels of steering. पहले हम ज्यादा हार्ड पोर्ट स्टारबोर्ड देते हैं, वेसल स्विंग करने लगता है तो सेकंड फेज कम्स. So like that, as we already discussed, that the autopilot system, the control unit, जो उसका mind है, that works in different phases, different modules, what we call the PID system. The PID, the P stands for proportional control, I for integral control, and D for derivative control. So a complete autopilot is consisting of all these three types of control. Basically housed in one unit only. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अलग अलग पार्ट है, एक पार्ट ये करता है, दूसरा पार्ट ये करता है, तीसरा पार्ट ये करता है. Proportional control is, as the name says, rudder will be applied in proportion to the error voltage. अगर error voltage ज्यादा है तो ज्यादा rudder,
अगर एरर वोल्टेज कम है तो कम रडर। The rudder is applied in proportion of the deviation of the course. जो सेट कोर्स है उससे जितना दूर है, अगर ज्यादा दूर है तो ज्यादा रडर, अगर कम दूर है तो कम रडर। Derivative control, on the other hand, is not looking at the difference between the CTS and gyro heading. What it is looking at? It looks at the rate of swing. How fast is the heading changing? Seeing that change in the heading, the rudder is brought to midship even before the ship is coming to set course. Matlab, if this was the course to steer, ship was going in this direction, this much of difference was there, so proportional control लग जाती है यहाँ पे। प्रोपोर्शनल कंट्रोल के बाद जहाज धीरे धीरे मुड़ना शुरू होता है, there is a change of heading from here to here. इतना हेडिंग चेंज हो गया है, रेड एंगल। When it was changing from here to here, the derivative control starts its action. Seeing this rate of change of the heading, it will bring the rudder to midship at this place itself. Midship आ गया, लेकिन चूंकि जहाज स्विंग कर रही थी तो वो धीरे धीरे करके स्विंग होती हुई सीधी अपने ट्रैक पे आ जाएगी, और अगर जरूरत पड़ा तो काउंटर रडर भी लगाएगी। सो प्रोपोर्शनल कंट्रोल पहले, when there was a difference between the set heading and the current heading. Once the vessel starts to swing, then derivative control will kick into action. It will take over proportional control को पीछे कर देगा, खुद आगे आएगा, and it will override the proportional control and bring the rudder to midship even before the ship is coming to set course. So the ship then finally starts doing a course parallel to the track that we have planned. Remember, the नीचे वाली line was the planned track earlier. So proportional and derivative control put together will set the vessel on a parallel course, the orange course, which is parallel to the CTS. Read through this. All right, make this diagram. Everyone, please make this diagram. Block diagram of autopilot system. सर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी 20 मिनट बाकी, आज के लिए इतना ही क्यों? This सर cannot अभी go on. डायग्राम पे तो बनाएंगे। एक बार डेरिवेटिव वाले समझा दीजिएगा। Exactly, अभी 20 मिनट बाकी है, पहले डायग्राम बनाइए इसके। ये ऐसे क्लास नहीं छोड़ेगा ना भाई। सर आपकी स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई, क्या बोलते हो? विजिबल नहीं है, यस सर। नहीं दिख रहा सर। हाँ अब आ गई सर। नाउ ब्लॉक डायग्राम आ गई सर। आ गई।
हाँ सर। Okay. Please make the diagram. ओके सर। Yes. ये डायग्राम आ सकता है क्या? बहुत आ सकता है. Yes. That is why I'm getting you to practice that. हो गया? सर इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर बना रहे हैं अभी। Okay. Make it quickly.
सर 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 हाँ हो गया सर. okay. All right, so quickly, proportional control, as we have already said, the rudder is applied in proportional to the difference between the current course and the CTS, the course to do. When this is happening, the rudder is applied and the vessel starts to swing. Then derivative control kicks in and it takes over the control and brings the rudder to midship, towards the midship, seeing how much swing is there. अगर swing कम है तो वो allow करता है कि ठीक है proportional चलता रहे. अगर swing बढ़ने लगी तो कम करता है. So if we steer only by the proportional control, that means the rudder will be applied. Rudder will be applied all the time when they, supposing we have to go 0 0 0, ship is here, तो यहाँ पे रडर स्टार्बोर्ड देना पड़ेगा. जब जहाज थोड़ी सी यूं हो जाएगी तो भी रडर पड़ता रहेगा. जब जहाज सीधी होगी तभी मिडशिप होगा. करेक्ट. तो इस केस में Yes, ये sir. इधर को स्विंग कर जाएगा या नहीं? हाँ सर. तो इसी में इसको बचाने के लिए, ओवरशूट को बचाने के लिए डेरिवेटिव कंट्रोल होता है, जो डेरिवेटिव कंट्रोल शिप को ओवरशूट नहीं होने देता. इट स्टॉप्स ब्रिंग्स द रडर टू मिडशिप बिफोर. ये लाल वाला कंडीशन दो, इसी कंडीशन में मिडशिप ले आएगा तो बचा हुआ टाइम जो है that will swing slowly because of momentum and then finally set on the new course. But only if the proportional control is there. What will happen? अभी जो हम देख रहे थे कि एक बार इधर को गया, करेक्शन होकर के आएगी, फिर जहाज इधर को चला जाएगा. सो ट्रैक के चारों बगल ऐसा ऐसा घूमता स्नेकी मूवमेंट करता चलेगा अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोल हुआ तो. रीड इट. नेक्स्ट. ओवरशूट गिर गया तो फिर करेक्टिव हेल्म होगा वापस लाने के लिए. The rudder is brought to midship when the ship is coming to the set course. सर ये वाली स्लाइड दिखना ही है ढंग से. पीछे वाली. ये वाली ओके. हो गया. Yes, Yes. sir. नेक्स्ट.
So if we have only the proportional control, this is the situation that will develop. सर ये Remember- slide क्या दिखा रहा है? Come again? नहीं सर वो दिख नहीं रहा था पहले स्लाइड का. Okay. So when only proportional control is there, तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है ऑटो पायलट काम करेगा जब तक ये अपने कोर्स पे आती है तब तक रडर अप्लाई होगा इस टाइम तक. लेकिन चूंकि अभी स्विंग कर ही रहा था तो ये इधर को घूम जाता है. So the vessel will keep on oscillating about the course to do. It will not settle on that course. And to bring the ship to set course, what we have is the derivative control, but we will take a look at that derivative control in the next class. So we have run short of time now. So in the next class, we'll see derivative control and the PID system. मेरे ख्याल से अगले एक क्लास में हो जाना चाहिए काम, और नहीं तो 1.5 क्लास रहेगी और. All right? Okay sir. Okay, sir. Hello Thank you, there. sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Have a good weekend sir. Bye. Thank you.